Sandeep said, do you also have one more story for that, or do you would like to add on something for that? Yeah, definitely. I have a story, and that story is, I think, is a popular story of a judgment of a bail order, basically, which was actually in a case of attempt to murder, which was in an attempt to murder case. It was a judgment by Shri Amitabh Rawat, Additional Session Judge. I am sharing my screen with all of you. Sure. I have the same on my desktop. I'm just sharing it. So what has happened during the argument? After the argument, the order was given by the judicial officer, and the order was in such a language. It was a poem. If you can see on my screen, the the order is there. The present application has a merit. Let me put it in a different way. Bablu pleading for his bail, state opposing tooth and nail. Summer bygone, winters have arrived, but crying we did, and Rahul cried. I am not the one, I am not the one. Too grave the charge, don't pretend. Whom did I attack? Where is he? Oh, that we know in the trial we will see. You say I have said and I deny for the first blush. Rahul may be gone, yet Sadish said, didn't we say don't rush? Let me go, let me go. Even Imran is on bail. Even then, I wouldn't be a smooth sail. It wouldn't be a smooth sail. Stop, 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 stop. I have heard a lot. Mind is clear with claim stall. It's my time to take a call. Babu has a sordid past. Proof is scant, which may not last. His omnipotence can't be assumed. Peril to vanished Rahul is legally fumed. Take your freedom from the cage you are in till the trial is over. The state is ring in. The state proclaims to have the cake and eat it too. The court comes calling before the cake is eaten, bake it too. So this is the kind. So see, as far as the judgment is concerned, the topic of the current topic, hefty language in judgment of Indian court is concerned. See, if we see a judgment, there are different parts of a judgment. Uh, like it starts from the pleading of the both the parties, and after the pleadings, the judicial officer is supposed to write the evidence of both the sides and the evaluation on it. Then there comes the judgment. So we need to understand what a judgment is having inside it. So the judgments are not hefty, but the pleadings are hefty, and because of the hefty pleadings and the evidences, the judgment are also getting hefty. As far as the flowery language is concerned, there is nothing wrong in using a flowery language, because we are in such a profession which is just black and white. और अगर थोड़ा सा उसमें रंग भर दें तो मेरे हिसाब से काफी अच्छा है. So it is not at all bad. But yes, definitely, as far as judgment is concerned, we need to understand, and the judgment should also be clear and targeted upon the issue. अब बच्चे क्या होता है, बेसिकली जितने स्टूडेंट्स है, दे आर एक्चुअली स्केयर्ड अबाउट कि अरे ये 20 पन्ने की है, 50 की है, 100 की, 1000 की, 2000 की. उनको डरना नहीं चाहिए. दे शुड नो हाउ टू रीड अ जजमेंट. उनको पता होना चाहिए कि कैसे कहाँ से स्टार्ट करना है. एज फार एज द फाइनल ऑर्डर इज कंसर्न्ड, वो इतना लंबा चौड़ा नहीं होता है, बट डेफिनेटली उस ऑर्डर पे पहुंचने के लिए जो तर्क वितर्क होते हैं वो काफी लंबे होते हैं, जिसकी वजह से जजमेंट्स काफी हैवी हो जाती है. बाकी मेरा तो इसमें यही कहना है कि वट एवर इट मे बी, इट शुड बी क्लियर एंड टारगेटेड. Okay, thank you, sir. But as you said, ki flowery language, you don't mind flowery language, but sometimes it gives complex to people like me, that if I'm not understanding the language, maybe I was wrong in studying law. I was failing somewhere. Okay, sir, I start with you only, Sandeep, sir, with my third and last sub theme for the day. Do you also have a take on how do you take that if we are connecting intellectual level with the communication skills, how far is that relevant? If I'm proportionally relating somebody, just directly proportionally relating somebody on the basis of the communication skills, कि कितना अच्छा वो बोल पा रहे हैं, आर्ग्यू कर पा रहे हैं, क्या उतने ही वो इंटेलिजेंट हैं. हम लोगों का एक ये टैबू है सोसाइटी में कि जितना अच्छा आप कम्युनिकेट कर पाओगे, जितना अच्छा आप दैट फैंसी लैंग्वेज यूज कर पाओगे कोर्ट में, कितना
आप कर पाओ, जैसे चोपड़ा सर ने भी बताया कि समटाइम लॉयर्स आल्सो फ्लॉन्ट कि we also know the language and all. So how far is that relevant? How do you connect that? सी, मैंने जैसा कि अपने स्टार्ट सबसे पहले टॉपिक में सिग्मा ऑफ नॉट नोइंग लिंगुअल लैंग्वेज में बोला था दैट योर कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर एंड इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल बाय एवरीवन. तो ठीक है, इट इज ऑलवेज बेटर टू यूज फैंसी वर्ड्स एंड ऑल, बट दोज फैंसी वर्ड शुड बी अंडरस्टैंडेबल बाय द जज इटसेल्फ. ऐसा ना हो कि आप कुछ ऐसी लैंग्वेज यूज कर लें जो जज को भी समझ में ना आए और आपका जो जो आप बताना चाह रहे हैं वो कम्युनिकेट ही ना कर पाए. तो बेसिकली एक होती है तलवार और एक होती है तलवार की धार. इफ यू आर यूजिंग अ प्रॉपर लैंग्वेज, अ प्रॉपर यू नो प्रॉपर वर्ड्स टू अ पर्टिकुलर फ्रेज, ठीक है, वो दैट विल वर्क लाइक ए तलवार की धार. बट ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आप जो है एग्जैक्ट या लीगल वर्ड्स या फिर कुछ फैंसी वर्ड यूज नहीं करेंगे तो आपकी जो है जो भी आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं वो किसी काम के नहीं है. वो भी बहुत काम करेंगे. बट यस, डेफिनेटली जो भी आप कहें, जो भी कोर्ट में आपको बोलना है या कम्युनिकेट करना है, दैट शुड बी क्लियर एंड टारगेटेड टू द exact issue before the court. देखिए, just like to add to that point, which is कि हमारे यहाँ पे कम्युनिकेशन देखिए एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है. हम जो भी करते हैं वो कम्युनिकेशन उसका एक माध्यम हो जाता है, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, कोई भी काम हो, चाहे वो कानून का काम हो. हर प्रोफेशन में कम्युनिकेशन बहुत क्रिटिकल है. अनफॉर्चुनेटली कम्युनिकेशन एक बहुत इग्नोर्ड सब्जेक्ट है इंडिया में. ये एक ऐसा विषय है जो सही तरीके से ना कभी समझा जाता है, ना कहीं इसको स्कूल में पढ़ाया जाता है, ना कॉलेज में पढ़ाया जाता है. लोग मानते हैं कम्युनिकेशन, एक जो जनरल परसेप्शन है वो ये है कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप बोलिए, जबकि 90% ऑफ कम्युनिकेशन बोलना नहीं, सुनना होता है. तो ये एक एस्पेक्ट समझना बहुत आवश्यक है कि बोलने से पहले हम क्या कह रहे हैं उस पर थोड़ा गौर करना जरूरी है. हम किस चीज का रिस्पॉन्स दे रहे हैं और उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमको क्या चाहिए, वो दिमाग में रखना बहुत जरूरी है. मेरा मानना है कि कम्युनिकेशन, जैसे लॉ जैसे फील्ड में कम्युनिकेशन जो है, मैं उसको बिजनेस कम्युनिकेशन मानता हूँ. और मुझे लगता है कि उसका एक पर्पज है, और उसका पर्पज है एक सर्टेन आउटपुट जनरेट करना. जैसे आपको जो आपको ऑर्डर चाहिए, आपको जज को उस ऑर्डर की तरफ लेके जाना है, तो वो कम्युनिकेशन पर्पसफुल है, वो एक पर्पज से कम्युनिकेशन हो रहा है. इसलिए उस कम्युनिकेशन को बहुत केयरफुली करना बहुत आवश्यक होता है. तो मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन को हर एंगल से समझना जरूरी है. अच्छे वकील के लिए लिसनिंग स्किल्स बहुत जरूरी है कि दूसरा साइड क्या कह रहा है, जज का सवाल क्या है, जज का टोन क्या है, जज क्या कहना चाह रहे हैं, और उसको समझ के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करना बहुत क्रिटिकल होता है. तो हम सिर्फ और हमारे कई बार क्या होता है कि इंग्लिश, जैसे इंग्लिश की बात आती है तो अक्सर हम लोगों को ये समस्या आती है कि इंग्लिश आप देखेंगे तो हमारी मातृभाषा नहीं है. ज्यादातर हम लोग घर में इंग्लिश नहीं बोलते, हम लोग घर में दूसरी भाषाओं का प्रयोग करते हैं, और इंग्लिश एक एक्वायर्ड लैंग्वेज है. तो हम में से बहुतों के साथ ये समस्या आती है कि जब हम इंग्लिश में कुछ सुनते हैं तो हमारे दिमाग को अपनी मातृभाषा में ट्रांसलेट करते हैं अपने दिमाग में, फिर हमारे दिमाग में एक नेचुरल रिस्पॉन्स आता है हमारी मातृभाषा में उसको, फिर हमारा दिमाग हमारा जो रिस्पॉन्स है उसको वापस अंग्रेजी में ट्रांसलेट करता है, फिर हम उसको बोलते हैं. तो मुझे लगता है इस प्रक्रिया में कई बार बहुत सारा ट्रांसमिशन लॉस हो जाता है, और वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कई बार एक्यूरेटली नहीं हो पाता है. तो ये एक ऐसी चीज है जिस पे थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है. और तो इसका मेरा जो तात्पर्य है ये बताने का, वो एक सारे स्टूडेंट्स को एक छोटा सा वो एक मेरी सलाह है कि अगर आप इंग्लिश को यूज करेंगे, अगर आपको लीगल लैंग्वेज के हिसाब से इंग्लिश को यूज करना है, तो उसमें एक प्रोफिशिएंसी आना बहुत जरूरी है. और वो प्रोफिशिएंसी तब आएगी जब आप उस भाषा में सोच पाएंगे, और उस लेवल पे पहुंचने के लिए आप जितना ज्यादा एक्सपोजर रखेंगे उस भाषा का, उतना जल्दी उतना आराम से आप उस चीज को कर पाएंगे. So I think what is critical is that we have to be able to think in that language, and only then will we be able to get the most
precise translations and get the most accurate words which we need at a certain point in time to be able to articulate specifically what we want to articulate with the expressions that we need to articulate this. Now the other angle of what you talk about, which is the connect to intellect of the language. ये बहुत जरूरी है क्योंकि मुझे लगता है कि जहां विचारों में क्लैरिटी है, वो विचारों की जो क्लैरिटी है वो आपकी भाषा में झलकती है। तो अगर आपको किसी विषय पे अगर आपकी अच्छी समझ है, आपकी अच्छी पकड़ है, तो आपकी वो जो विचारों की एक क्लैरिटी है, वो क्लैरिटी आपकी भाषा में झलकती है। तो मुझे लगता है कि इसीलिए एक अच्छे वकील को भाषा के अलावा उसको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। तो एक ऑलराउंडर जो है, मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा वकील बन पाता है सिर्फ एक एरिया के स्पेशलिस्ट के बजाय, क्योंकि उसकी जो डेप्थ ऑफ नॉलेज है वो उसके एक्सप्रेशंस में कहीं ना कहीं सामने आती है। और जहां तक हम बात करें कोर्ट की, तो आप देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जब केस चल रहा होता है तो बड़ा प्रेशर वाला माहौल होता है कि जज जो है उनके दिमाग में कई सारे सवाल होते हैं, दूसरी साइड से लगातार कोई ना कोई दलील दी जा रही होती है, आप अपनी दलील रखते होते हैं। तो इस बीच में कई एक थोड़ा सा प्रेशर का माहौल बनता है और उसमें फिर ये जरूरी हो जाता है कि आप जज को अपने साथ लेके चल सके। तो वहाँ एक भाषा बहुत क्रिटिकल हो जाती है कि आप किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आप कहाँ कितना स्पेसिफिकली कैसे आर्टिकुलेट कर रहे हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, एक इसमें एंगल और आता है वक्त का। आप देखेंगे जैसे जैसे आप लेवल बढ़ता जाता है कोर्ट का, वैसे वैसे जजेस के पास अवेलेबल टाइम कम होता चला जाता है। तो आप देखेंगे कि जजेस इसलिए चाहते हैं कि जितनी फोकस बात हो, जितना फोकस डिबेट हो, उतना ज्यादा वो उसको प्रेफर करते हैं। अब आप जैसे हाईएस्ट कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट की, तो एडमिशन डेज पे आप देखेंगे मंडे या फ्राइडे पे 90% रिजेक्शन रेट होता है। तो आपके पास एज अ वकील एवरेज 1 मिनट का वक्त होता है अपना केस जज को समझाने का, और वो पहले से फाइल पढ़ के आते हैं, पहले से वो उनका मन बना हुआ होता है कि वो आपको उस मैटर में रिलीज देंगे या नहीं देंगे, और उस 1 मिनट में आपको जज को कन्विंस करना है कि आपके मैटर में इतना मेरिट है कि वो इमीडिएटली नोटिस इशू करके और आपको एडमिट करें। तो वहाँ भाषा बहुत बहुत क्रिटिकल हो जाती है। तो ये सब कुछ और इसी एस्पेक्ट हैं जो मुझे लगता है कि हमारे छात्रों को समझने की आवश्यकता है। और तो मुझे लगता है कि कानून के साथ साथ भाषा पे भी उतना ही ध्यान देना बहुत जरूरी है। एक I have a little problem of time today. I'm required to be traveling, so this is the stage where I have to really thank you and thank all my other fellow panelists on the discussion. So this has been the most wonderful, discussion, and I hope कि हमारे जितने भी छात्र इससे हैं वो इससे कुछ ना कुछ लाभ ले पाएंगे. So thank you very much for inviting me. It's been an absolute delight, and I will take my leave from all of you at this point. Thank you. Namaskar. Thank you, sir. Thank Okay, you Jadid, thank you. Thank you for coming, sir. Means a lot, sir. Thank you. Thank you, sir. Isha, I like to add, take it further from Jadid. Sure, sir. Like we are talking on your third topic, how far can intellect be relatable with language efficiency? I would just like to add few points. That is language. What is language? Language basically gives us the ability to connect our intelligence to other by talking, by reading and writing. We agree, all of us agree, I think off and on, that no doubt proficiency in English or any other language is technically a measure of intelligence, because it's a primary means. Like mostly why we are communicating between Hindi and English is because these are the two languages which are being predominantly used for a legal profession all over the country, be it the High Court or Supreme Court, and most probably in the District Court. Language is English language, or is basically the primary means which we all communicate. So we categorize, all of us categorize in our perception the intelligence of others, right? So what we see is that it is the ability to express yourself. If I am speaking something in a proficient manner, it is my ability to express myself and speak fluently, whether it is in speech or it is in my writing or is
And I would rather say it's just a matter of life skill. It's just a kind of a life skill. Like one develops the life skill habit of having a good diet or a good exercise. It's also having a understanding or speaking in a good English language is a matter of life skill. So it's builds the good language spoken by us, most probably English. It builds one personality and boosts us also in communicating with people. Like we all see Shashi Tharoor speaking, most of the words we also don't understand at times. We think he's a very intelligent guy. He knows a lot about literature. He must be well read, well spoken. And this is where we think, and most of the clients, they at times do carried away when we speak a good English in court, irrespective of the factum that we lose. They say, Vakil Saab, you did your best. You did your best. And the public also who see us arguing the matter, or the other lawyers at times, they also analyze our intelligence by our language, the way we speak, or the way we address the court. And I purposely tried my best to answer this query in English language so that all of your students don't measure my intellect from the first two topics where I had spoken both in English and Hindi. Okay, ma'am, thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much. It was so wonderful. And I'm so glad that you are so interesting and entertaining as well. So law is just not about white and black. You didn't use any flowery language, but you made your connection somehow very well. Thank you so much, sir. Thank you for participating. Thank you so much. Thank you for taking your valuable time, sir. Thank you, sir. Thanks, We'll see you in Parul. future as well. Thank you.